Hello and welcome to Question Hour, a unique show on Rajya Sabha TV where we get you latest from the Parliament House session and the questions asked by the members in the upper house and the replies given by the ministries and department. I'm Rajat Kain and joining with me my colleague Kriti Mishra. Thank you so much, Rajat. So let's take our viewers through important questions and answers in this edition of the Question Hour show that we've filtered for them. Well, the first question of the show that was asked by member Dr. Satyanarayan Jatia from Ministry of Youth Affairs and Sports. The member asked number of sport events organized under Khelo India so far, along with locations and details, a number of participants, talent selection and encouragement given to all the athletes. Well, in the response, the government says that the Khelo India scheme aims at promoting the culture of sports in India as well as attaining excellence in sports. The scheme in its present form was started in October 2017 for a period of 3 years with a financial outlay of 1,428 crore rupees, and so far 1,358.31 crore rupees have already been spent and 69.78 crore is presently available for the remaining period for the third and last year of the scheme. The revised Khelo India scheme beyond the financial year 2019-20 is also under preparation. Society for Economic Development and Environmental Management has been appointed for third-party assessment of Khelo India scheme. Presently, 2,747 athletes are benefiting under the Khelo India scheme of the government, of which 1,335 are benefiting from residential training facilities as well. The number of training athletes in supporting the events are likely to go up with the proposed revision of the scheme. The government is committed to expand Khelo India and provide all necessary financial support. In fact, Rajat, member Satyanarayan Jatia joined us on the Question Hour show, and this is what he had to say on government's response to his query. Listen in. And joining us on the Question Hour show is Rajya Sabha MP Mr. Satyanarayan Jatia. Sir, welcome to Rajya Sabha Television. आपने खेलो इंडिया पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी चल रहे हैं. कितना महत्वपूर्ण विषय? वास्तव में यह एक अच्छी शुरुआत है और खेलो इंडिया का अर्थ यही है कि खेल की प्रतिभाओं को तलाश करने का एक अच्छा अवसर तलाशना. मोटे तौर पर हमारे देश में अनेक प्रकार की विधाओं में लोग खेलते रहे हैं, किंतु इन दिनों में चूँकि खेल सुविधाएं सिमटती चली जा रही है और हम देख रहे हैं कि गाँवों में भी जो जिस प्रकार का देशी खेलों का भी चलन था वो भी ख़त्म होते जा रहा है, जिसमें कबड्डी, खो खो, आटिया पाटिया ये सारे खेल हुआ करते थे. अब बाकी के जो नए खेल आ गए हैं उन खेलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण के बिना खेलों को ठीक प्रकार से खेल पाना संभव नहीं है. मैं एथलीट रहा हूँ, धावक रहा हूँ 3000-5000 मीटर का. उस ज़माने में जब हम दौड़ते थे तो निश्चित रूप से हमारे पास स्पाइक्स भी नहीं हुआ करते थे, किंतु दौड़ते थे तो दौड़ते थे. फिर स्पाइक्स जब आ गए तो उसका अभ्यास अलग से करना पड़ा. तो मोटे तौर पर ये सारी जो सुविधाएँ आ गई हैं, यदि हमको अच्छे खिलाड़ी निकालना है जिसका स्तर राष्ट्रीय स्तर हो, जिनका स्तर विश्व स्तर पर हो, जो ओलंपिक में अपने देश का नाम कर सके, तो एक अच्छी शुरुआत है जिसके माध्यम से ये खेलो इंडिया के माध्यम से हम उसमें से प्रतिभाओं को तराश सकते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं. खेलो इंडिया एक तरह से ये मुहिम ऐसी है जिसमें कि शिक्षा भी है, ये मुहिम ऐसी है जिसमें कि खेलों की दीक्षा भी है. तो यह अच्छे जो टैलेंट खिलाड़ी आएंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा उपाय किया गया है. सर, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस तरह से जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं. निश्चित रूप से संभाल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है. तो टैलेंट का सर्च करना, टैलेंट की पहचान करना और फिर उनको आगे बढ़ाने का काम करना, क्योंकि हर व्यक्ति कोई सुखी और समृद्ध होगा और सक्षम होगा ऐसा नहीं है. खिलाड़ी जो आते हैं निश्चित रूप से वो हर वर्ग से आते हैं. उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ क्या होती है और निश्चित रूप से उनके जो पालक होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनकी और आर्थिक क्षमताएं कितनी होती हैं. तो यदि ऐसे खेल हैं जहाँ की वित्तीय संसाधन लगने वाले हैं, तो ऐसे जो लोग कमज़ोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं वो उसमें टिक नहीं पाते हैं और कर भी नहीं पाते हैं. तो ऐसी संभावनाओं को तलाश करने की दृष्टि से जब हमने उनमें प्रतिभाओं को तलाश करना है तो उनको सहायता देने का काम करना चाहिए. और सरकार ने साई करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जिसके माध्यम से उनका आगे का प्रशिक्षण करना चाहिए और उसमें उनकी प्रतिभाओं का विकास करते हुए उसको उस स्तर तक ले जाना चाहिए जिसमें उनकी वो चिंता मुक्त होकर के अपने जीवन का यापन करने के उपाय कर सकें. होता यह है कि जब खिलाड़ी खेल खेलता है तो
तो घर के लोग उसको रोकते रहते हैं और कहते हैं कि खेल खेलने से आगे का जीवन तुम्हारा, आगे का भविष्य तुम्हारा उज्जवल नहीं होगा, आगे का भविष्य तुम्हारा अंधकारमय हो सकता है। परंतु कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो कि इसको दांव पर लगाते हैं और हमने देखा है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को प्रोत्साहन देने का काम किया है उसमें से प्रतिभाएं निकली है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम गौरवान्वित किया है। तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों को सही समय पर सही सहायता देने का काम, उनको आर्थिक सहायता देने का काम, उनको शिक्षण में भी सहायता देने का काम, जिससे शिक्षा के काम में वो पीछे न रहे और निश्चित रूप से खेलों के अपनी प्रतिस्पर्धाओं में जिस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए उसमें भी वो पीछे न जाएं और एक तरह से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से जो टैलेंट हमको मिलता है उनकी संभाल करने का काम कर सकें। और आज नहीं तो कल जो विश्व में हमारा स्थान ओलंपिक में नहीं है उसमें एक अच्छी प्रतिमा हमारे देश की बन सके और अच्छे मेडल्स हम लेकर के देश का नाम गौरवान्वित कर सके, इसकी आवश्यकता है। और यह काम हो सकता है हमारे प्रतिभाओं को ठीक प्रकार से वित्तीय सहायता दे करके, उनको प्रोत्साहन दे करके। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि ये क्रम ठीक प्रकार से जारी रहा तो देश में अच्छी प्रतिभाएं भी निकलेगी और आगे हम देश में देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में गौरवान्वित कर सकेंगे। So those were very important points that you were making. Thank you so much for talking to Rajya Sabha Television. And now let's move on to the next question that has been asked by member Naran Lal Pancharia, and this question is to the Ministry of Finance. And the member has asked the government whether it has any mechanism for sharing real-time GST invoices and eway bills with the respective state governments. In a reply, the ministry said the tax authorities of centre and states can access the eway bill portal developed by the National Informatics Centre and view real-time data. Further, NIC has started sharing eway bill on near real-time basis with gap of about 30 minutes in pulling real-time data to those states which make such request. Presently, UP and Kerala are pulling the near real-time data using application program interface. The eway bill contains the relevant details of the GST invoice as well. Now, with access to real-time eway bill data and invoices details, it has become possible to detect cases of fraudulent activities and irregularities under GST much before returns are filed. Moving on to the next question that was asked by member Sushil Kumar Gupta from Ministry of Science and Technology. The member asked whether it's a fact that an ink has been discovered by Council of Scientific and Industrial Research and National Physical Laboratory to combat the problem of fake printing of passport and counterfeiting of currency. The response given by the government is an affirmative, and the government says that CSIR National Physical Lab has developed a bioluminescent security ink which glows in red and green colors when illuminated by two different excitation sources at 254 nanometers and 365 nanometers respectively. The ink was prepared in a batch of 1 kg and given to Banknote Press, Devas, a unit of Security Printing Minting Corporation of India Limited. The ink is found comparable to the standards that are in use globally. The formulation can be used to check the authenticity of passports, government documents, tamper-evident labels and also identity cards. Let's move on to the next question that has been asked by member T. Govendra Reddy, and this question is to the Ministry of Tourism. And the member has asked the government whether it plans to bring out a national tourism policy to promote tourism in India. Well, giving a detailed reply, the ministry said a new draft tourism policy has been formulated, which is currently being reviewed in Ministry of Tourism prior to seeking cabinet approval on the same. Now, some of the salient features of the new draft policy is focus on policy on employment generation and community participation in tourism development, stress on development of tourism in sustainable and responsible manner, an all-encompassing policy involving linkages with various ministries, departments, states and union territories and other stakeholders. The policy enshrines vision of developing and positioning India as must-experience and transformational destination for global travelers while encouraging Indians to explore their own country. The development and promotion of various tourism products including the rich culture and heritage of the country as well as niche products such as medical and wellness, meetings, incentives, conferences and exhibitions, adventures and wildlife. Development of core infrastructure, that is airways, railways, roadways, waterways as well as tourism infrastructure. Developing quality human resources in tourism and hospitality sectors across the spectrum of vocational to professional skills development and opportunity creation.
creating an enabling environment for investors in tourism and tourism-related infrastructure, emphasis on technology-enabled development in tourism, and lastly, focus on domestic tourism as major driver of tourism growth. Well, moving on to last question of this edition of the show that was asked by member Mr. Waiko from Ministry of Power. The member asked whether the government has come out with a draft fuel efficiency norms for heavy vehicles in near future. Responding to this query, the government says that Ministry of Power, in consultation with Bureau of Energy Efficiency, has notified fuel efficiency norms for heavy-duty vehicles having gross vehicle weight of 12 tons and above, wide order dated 16th of August 2017. The government further says that the enforcement of the norms is done by the Ministry of Road Transport and Highways. Every vehicle manufacturer needs to comply with fuel consumption value in litres per 100 kilometres obtained by the equation corresponding to the vehicle in the notification. Depending on the type of vehicle, each vehicle manufacturer would undertake suitable design changes in the engine systems, the transmission, the aerodynamics of the vehicle, tires, etc. as appropriate to meet the fuel efficiency norms as set out by the government. If any model of any manufacturer has fuel consumption more than the prescribed value, the manufacturer will not be permitted to manufacture, sale or import of that particular model. Well, that's it in this edition of Question Hour. Me and Kriti sign off here, but do not go anywhere. Prashan Kal, the Hindi version of Question Hour on the other side of the show. Stay tuned to Rajya Sabha Television.